a very warm welcome to LWS. Today I'm going to touch on a very recent summit that has happened और जिसके ऊपर हमने already proper video भी cover किया है, that is SCO, Shanghai Cooperation Organization. इसका हाल ही में summit हुआ था 2023 summit of head of councils of states जो इंडिया ने host किया था virtually. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसे चेयर किया था. सो आई हैव ब्रॉट यू सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस समिट, उसके जो की पॉइंट्स थे, उसकी क्या रेलेवेंस रही है, ऑल दैट थिंग्स ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे. राइट, सो कमिंग टू एससीओ समिट 2023, right? SCO Summit 2023. SCO we all know it stands for Shanghai Cooperation Organization. और आपको पता होगा इनिशियली जब ये बना ही था, it started off with Shanghai 5 in 1996. Later on with joining, जैसे उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, then it became SCO. उसका नाम चेंज करके SCO रख दिया गया था. राइट, सो व्हाट इज Shanghai Cooperation Organization? इसका जो 2020 समिट था, क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट वॉज होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. ठीक है, और ये जुलाई में ही हुआ था समिट. राइट, इसी महीने की बात है. एंड इट इज द 23rd summit of SCO head of states. Right, it is the 23rd summit of SCO heads of state. राइट, ये वर्चुअली कंडक्ट हुआ था इंडिया में. ओके, एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इसको अटेंड किया था चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, देन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. ये कुछ नोटेबल अटेंडीज थे अमंग अदर हेड्स ऑफ स्टेट्स जिन्होंने इसको अटेंड किया था. राइट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सारे वो मेंबर स्टेट्स हैं जो आजकल की जियो पॉलिटिकल एरेना में बहुत बहुत एक्टिव है. दे ऑल दीज नेशंस प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन द करंट और रीसेंट developments of the geopolitical affairs in the world, and they personally attended this summit virtually. So this also makes this particular summit very, very important, right? Apart from that, Iran, Belarus, and Mongolia, they attended as observer states. They attended as observer states. Then Turkmenistan was invited as the guest of the chair. Which is another tradition of SCO. अब chair कौन है? इंडिया. चेयर इज इंडिया, और इंडिया ने चेयरमैनशिप एज्यूम की थी 2022 समरकंद समिट में. समरकंद समिट जब हुआ था सितंबर 2022 में, उस वक्त इंडिया को चेयरमैनशिप मिली थी एंड टर्कमेनिस्तान वाज द गेस्ट ऑफ द चेयर. सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स. ये इस बार के समिट को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. देन इस साल का जो समिट है, इसका एक थीम है, दैट इज SCO Secure. SCO Secure ये 2023 का जो समिट था उसका थीम था. Now secure, it's an acronym. Secure is not a word here, it's an acronym where S stands for security. S stands for security, economic development, right? Then we have connectivity. C stands for connectivity, U stands for unity, R stands for respect for territorial integrity and sovereignty, and E stands for environmental protection. ठीक है, S security, economic development, connectivity, unity, respect for territorial integrity and sovereignty, and E stands for environmental protection. So this is the
थीम फॉर SCO समिट 2023 जो इंडिया ने होस्ट किया था, और इंडिया को चेयरमैनशिप कब मिली? इन द 2022 समरकंद समिट में जो सितंबर में हुआ था, तब इंडिया ने चेयरमैनशिप अज्यूम की थी। इसमें ये कुछ नोटेबल अटेंडीज रहे थे, प्लस Iran, Belarus and Mongolia, they attended the summit as observer states. Another very important fact that makes this summit really important is summit में Iran was included as the 9th permanent member, right? Iran was included as the 9th permanent member. So this is a very important development in the summit which we need to take care of. Now, apart from that, all the world leaders which had attended the summit, they have called for a more representative and multipolar world order. More representative and multipolar world order which will work in the global interest. So ये सारे जो इसके heads of states जिन्होंने attend किया था, उनकी ये joint declaration थी. So now coming to the key points of the summit. Now coming to the key points, इसमें जो सबसे पहला key point है वो है न्यू दिल्ली declaration. न्यू दिल्ली declaration. Now ये कुछ declarations थी which were made during this summit, which is very important कि आपको पता हो ये किन lines पे declarations हुई थी और इनमें क्या क्या चीजें discuss हुई थी, ठीक है? So it was signed by, the declaration was signed by all the member states. All the member states, and it states that the international community should come together to counter activities like counter activities like those of terrorists, separatists and extremists with special attention, while paying special attention to religious intolerance. Then you have aggressive nationalism, right? Or you could say activities like ideas of fascism, right? ये कई जो countries में उठ रहे हैं, right? Different kinds of racial discriminations, इनको oppose करना चाहिए, etc. Right? So this was what was mentioned in the New Delhi Declaration. Right? हर जो summit होता है इसका एक declaration होता है, और New Delhi Declaration जो सारे member states ने sign किया था, उसमें mention था that the international community should come together to counter the activities of terrorists, separatists and extremists while giving special attention to religious intolerance, aggressive nationalism, ideas of fascism, various kinds of racial discrimination and other forms of discrimination which are prevalent in these societies, right? Coming to the next point, that is now coming to the next point, that is इसमें जो two key, पहला तो आपका की पॉइंट्स में आ गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है? सेकंड है टू जॉइंट स्टेटमेंट्स वर आल्सो इशूड, ठीक है? क्या हुआ? पहले न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया, फिर टू जॉइंट स्टेटमेंट्स भी इशू हुई. अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे समरकंद समिट हुआ था 2022 में, just like that in SCO Summit 2023 there was no mention of Russia Ukraine conflict. इस कॉन्फ्लिक्ट का सारे समिट में कोई मेंशन नहीं किया गया था. सो दिस थिंग यू रियली नीड टू कीप इट माइंड. इवन इन समरकंद समिट जो 2022 सितंबर में हुआ था, उस वक्त भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र नहीं किया गया था, बिकॉज रशिया इज एन इंटेग्रल मेंबर ऑफ SCO,
right? So that also causes one of the dilemma for India on a world stage, but that's a separate game altogether, separate story altogether, जो हम इस वक्त नहीं डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लाइक इन समरकंद समिट, इस साल के समिट में भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी. ठीक है. नाउ कमिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट्स इशू हुई थी. दैट इज, पहली स्टेटमेंट कहती है कोऑपरेशन इन countering radicalization. सारे member states should cooperate in countering radicalization, which of course leads to activities of terrorism, which lead to terrorism or extremism and separatism. तो इनको काउंटर करना है, कोऑपरेट करना है इनको काउंटर करने के लिए. इनको रेडिकलाइजेशन, जो रेडिकलाइजेशन होती है, जो यूथ को गुमराह किया जाता है, जिस वजह से टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म जन्म लेता है in different parts of the world and specifically in this region where the SCO nations are situated. Okay, then second is cooperation in digital ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, cooperation in digital transformation. So this is the second form of cooperation, या second joint statement that was issued by these nations, right? So cooperation in digital transformation, that is these nations will come together and they should cooperation on these lines as well. Coming to the next part, in which I will discuss new pillars of cooperation, right? So the new pillars, third part is the new pillars of cooperation. ठीक है. अब India has given 5 new areas. India has given 5 new areas or pillars of cooperation. ठीक है, या focus areas of cooperation. So these are, number 1, it is traditional medicine. Then we have startups and innovation. Traditional medicine, startups and innovation. Then we have number 3, digital inclusion. Number 4, youth empowerment. And lastly we have shared Buddhist heritage. ठीक है. So the 5 new pillars of cooperation or focus areas which India has given, they are traditional medicine, startups and innovation, digital inclusion, youth empowerment and shared Buddhist heritage. So these are the new pillars of cooperation that have been put forth by India. Coming to Prime Minister Modi's address, which is also a very important part. आपको जो पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा और कौन सी चीज़ों को स्पेसिफिकली मेंशन किया, राइट? सो प्राइम मिनिस्टर मोदीज एड्रेस, इन्होंने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 स्पेसिफिक बातों पे फोकस किया या एम्फेसिस दिया. पहला था, ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी. He stressed the importance of connectivity between member states. He said that connectivity should be promoted among member states to enhance more trade and enhance more trust among all the SCO members. So उसके लिए he emphasized the importance of connectivity, right? Secondly, he said that the basic principles or the fundamental principles of SCO. Fundamental principles of SCO should be upheld, right? Should be respected, should be upheld, specifically respecting the sovereignty and regional integrity of all the member states, right? So that was the second thing which he
emphasized. Third thing and very important and strongly जो जिस thing को उन्होंने बहुत strongly emphasize किया, that is he openly condemned the countries which employ cross border terrorism, हम सब जानते हैं किसकी ओर पॉइंट किया गया था. दैट वाज पॉइंटेड डायरेक्टली एट पाकिस्तान. ही स्ट्रांगली कंडेम्ड द कंट्रीज which employ cross-border terrorism as a state policy specifically to destabilize other neighboring countries. And he also urged other member countries of SCO to come up and openly condemn these countries जो ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज को हमें मोर ओपनली और मोर वेहेमेंटली इसको अपोज करना चाहिए. दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्रिटिकल डिस्कशंस ऑफ ऑल SCO समिट्स. एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, वो ये है कि इंडिया ने जो चाइना का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर जो स्टेटमेंट था उस पर साइन नहीं किया. We had our own reservations in the SCO Summit 2023 and we did not sign the BRI statement, जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट था जो चाइनीज लेड है, उस पर हमने साइन नहीं किया. क्यों नहीं किया? इसकी कई वजहें हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर रीजंस, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज बिकॉज मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स दे फॉल इन POK, that is Pakistan occupied Kashmir, which India says is a violation of our sovereignty. So that is one of the major reasons we have not signed the BRI statement. That was part of the economic strategy, SCO members का economic strategy statement, right? So these are the 4 important parts which you should remember as far as Indian Prime Minister's address and जो भी इस समिट में हुआ उनको लेके जो important चीजें थी वो डिस्कस हुई. So these are the important points which I have covered today, which you should know related to SCO summit. This can be an important part of your this mains examination because ये इसी साल हुआ है summit and it has been attended by some of the most vital nations of the world, right? So you need to remember these. Keeping these points in view, I bring this topic to a close. Thank you so much for watching. Please leave your questions in the comment section below and do remember to subscribe for the channel and do like the video, and yes, do hit that bell icon so that whenever I upload a new video you get notified. Thank you so much for watching.